Hello students, I hope you all are fit and fine. Today I am beginning with a new and important topic, that is plant tissue. Alright, so before we begin with the term tissue, let us understand what is tissue. So you all know that cell is the basic structural and functional unit of life. Group of similar cells performing similar function forms tissue. Tissue group together to form organ, organs group together to form organ system, and organ system group together to form organism. Okay, so I have already made a video on cell. You all can have a look at it. Today we will begin with the tissue, and that too specifically plant tissue. Okay, so I will make both the lectures of plant tissue as well as animal tissue. So today let us begin with plant tissue. Alright, so when we talk about plant tissue, so it is basically bifurcated into two categories, meristematic tissue and permanent tissue. Now what is meristematic and what is permanent tissue? See students, these are very simple thing to understand, that when you notice when a tiny seed, okay, when a tiny seed starts growing, you can say starts germinating, so these cells are very small, thin wall and full of cytoplasm. They divide rapidly. They divide rapidly in order to grow fast, in order to gain height, to grow fast. So when I say they grow, and when you say the growth, so growth needs what? See, any living being is made up of cell, either plant or animal, they are made up of cell. And when the growth takes place, so for increasing the height, the diameter, the number of cells should be increased. Okay, so that will be increased when the pre-existing cell will divide and form two new cells. Right? The older cells, they keep on dividing and keep on forming new cells. Okay, so this capacity of dividing and forming new cells is possessed by meristematic tissue and not by permanent tissue. Hence, you can say that the group of actively dividing cells forms the meristematic tissue, and meristematic tissue is found in all the growing parts of the plant. All the parts where the growth is seen. For example, shoot and root tip. Shoot and root tip. Alright. Also, they not only help in growing in height, but also they help in growing in diameter. Okay. Let's see first meristematic tissue. See, meristematic tissue is further classified into apical meristematic tissue, intercalary meristematic tissue, and lateral meristematic tissue. As the diagram is self-representative, we all can understand that the meristematic tissue which helps in growing the plant from its tip, which is present at the tip. Okay, and from here the cells keep on dividing. The cells keep on dividing and growth keeps on taking place. So this position ka tissue is called apical meristem, which helps the plant, or you can say the specifically root and shoot tips of the plant to grow in length. Alright. Then this intercalary meristematic tissue helps the plant in growing from this node. Okay, this is the branch, or you can say the node attached to the main stem. So here the growth should take place in order to grow this branch. So here the tissue which keeps on dividing and bring about the growth is intercalary meristematic tissue. Then this lateral meristematic tissue, see, as the
tree gains height, the diameter should also increase. है ना, इसमें चौड़ाई भी होना चाहिए. The width should also increase. So this is brought to the plant with the help of lateral meristematic tissue. Okay, this tissue is also referred to as a cambium. Referred to as a cambium or a lateral meristematic tissue, responsible for the increase in the thickness, or you say diameter, or say width of the plant. Alright, so very simple. Meristematic tissue is classified into apical meristematic tissue, intercalary meristematic tissue, and a lateral meristematic tissue. This was all about meristematic tissue. Now we go further towards the permanent tissue. See, permanent tissue, as the name itself suggests, if we go very specifically, so these are nothing but the modified form of meristematic tissue. Okay, so the new cells which are formed by the division of meristematic tissue, they elongate and on maturity get differentiated. What do we mean by the term they get differentiated? That means they get specified in their own work. They become specialized to perform any specific activity. Okay, so they get a specific function, and these cells do not divide further, unlike meristematic tissue. They divide, and this permanent tissue, they do not divide, hence they are called permanent. They do not divide. Okay, then permanent tissue is classified into simple permanent tissue and complex permanent tissue. See, simple tissue, these are composed of cells which are structurally and functionally similar. These tissues are composed of cells that are similar in structure as well as in function. Also, these tissue provides support and protection to the plant. Okay, simple meristematic tissue, they work together to provide support and protection to the plant. Whereas the complex tissue has a different kind of cells which are different in structure and function, but they are working together to form one system, is called complex permanent tissue. And we have xylem and phloem as a complex permanent tissue, together known as vascular bundles or conducting tissue. Alright, we'll see one by one. Now, when we talk about a simple permanent tissue, में सबसे first a parenchyma. So, see, the cells, this is a highly magnified image of the tissues. Okay, so the cells of the parenchyma they are very thin walled. Their walls are very thin and have intercellular space. See, this is one cell, this is another cell, and you can see अच्छा खासा space उनके बीच में. So this space which you can see is called intercellular space. Intercellular space means the space between the two cells. Intracellular space. Okay. Then, see, if we talk about the shape, they may be oval, spherical or cylindrical. As you can see, they may be oval, spherical or cylindrical. Right? And they are found almost in all the parts of the plant. For example, you can take, they are found in roots, they are found in stem, they are found in leaves, etc. Also, parenchymatous tissue, if they possess a chloroplast. Okay. So, they are referred to as a Sclerenchyma. That means Sclerenchyma is a kind of parenchyma tissue that possesses a chloroplast. This chloroplast in turn possesses a chlorophyll,
which is a green pigment which helps a plant in performing photosynthesis. All right. So what do we understand is the Sclerenchyma is a type of parenchyma only, but the difference is it possesses the chloroplast, which in turn possesses chlorophyll, which is a green pigment which helps in photosynthesis. Alright. Also, parenchyma tissue stores food for the plant. Alright. Then the other is Collenchyma. The Collenchyma tissue. If we see the cells of the Collenchyma, they are circular or oval or polygonal in shape. What is the meaning of polygonal in shape? That means they may have they may have many sides. Poly means many and gonal means sides. Okay. They are also found in young stems and petioles of the leaves. Alright. The other important thing about them are they are thickened at the corners. They are thickened at the corners due to the presence of cellulose and pectin. These are two different proteins which are present for thickening. And the intercellular spaces are absent. Okay. I'll give you an example that you might have seen in a movie, or you all might experienced yourself, that when the young kids, they hang on the branch of the tree. झूला झूलते हैं लटक लटक के, या उस पर झूला बांधते हैं, तो क्या जो ब्रांच होती है ट्री की वो टूट नहीं जाती है, उसमें एक लचकपन होता है, एक फ्लेक्सिबिलिटी होती है. सो दैट फ्लेक्सिबिलिटी इज गिवन टू द प्लांट बाय दिस Collenchymatous tissue. That means this Collenchyma tissue, they provide a flexibility and support to the plant. They provide flexibility and structural support to the plant. जो प्लांट में एक लचकपन होता है जिसको पकड़ के हम झूलते हैं, हम लटकते हैं और वो टूटता नहीं, तो वो लचकपन किसके वजह से है? Collenchyma टिश्यू के वजह से है. Alright. Then the third type of simple permanent tissue is this Sclerenchyma. The cells of Sclerenchyma, see the cells of the Sclerenchyma. Okay, they are long with tapering ends. टेपरिंग एंड मतलब कि कोई भी चीज़ ऐसा जब स्टार्ट होती है ऊपर से तो थोड़ी सी ब्रॉड होती है, लेकिन नीचे आते आते उसका जो एंड है वो क्या होने लगता है? नैरो होने लगता है. तो इसे कहते हैं टेपरिंग एंड. ओके, द नैरो एंड इज कॉल्ड टेपरिंग एंड. ओके, ऑल्सो these are thickened because of the presence of the material lignin. Collenchyma थिक था क्योंकि प्रेजेंस ऑफ सेलुलोज और पेक्टिन की वजह से, लेकिन Sclerenchyma के थिकनेस का राज क्या है? लिग्निन. बेसिकली दिस सेल्स आर डेड. These cells are dead. Okay, and do not contain any protoplasm. फॉर एग्जाम्पल आपने देखा होगा जब हम कोकोनट लाते हैं तो कोकोनट का जो हस्क होता है ना, ब्राउनिश कलर का, कितना वुडी जैसा होता है. जूट जो होता है, ये सब के जो फाइबर्स होते हैं वो सारे के सारे किससे बने हुए होते हैं? Sclerenchyma टिश्यू से बने हुए होते हैं. ठीक है, तो ये क्या है? एक प्रकार का डेड टिश्यू है जो क्या करता है? प्लांट को रिजिडिटी प्रोवाइड करता है. जो प्लांट है, प्लांट को रिजिडिटी प्रोवाइड करता है और प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है. हमने पहले ही बात की कि सारे ही सिंपल परमानेंट टिश्यू क्या करते हैं? प्लांट को प्रोटेक्शन और सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं. ऑलराइट, सो दिस वाज अ सिंपल परमानेंट टिश्यू.
एंड नाउ व्हेन वी टॉक अबाउट कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू, तो कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू में हमने क्या देखा कि इस टिश्यू में डिफरेंट स्ट्रक्चर और फंक्शन वाले सेल्स क्या कर रहे हैं, साथ में काम करके एक सिस्टम चला रहे हैं। ये हाईली मैग्नीफाइड इमेज है जाइलम का। ठीक है, देखते हैं डिटेल में जाइलम के बारे में। ये हाईली मैग्नीफाइड इमेज है जाइलम का। ऑलराइट, नाउ व्हेन वी टॉक अबाउट जाइलम, है ना, तो जो मेन फंक्शन है दोनों ही कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू का, इनका मेन फंक्शन है ट्रांसपोर्ट करना। देयर मेन फंक्शन इज टू ट्रांसपोर्ट। जैसे हमने वर्ड यूज किया था कंडक्टिंग टिश्यू। कंडक्ट मीन्स क्या, अपने अंदर से पास होने देना, अपने अंदर से किसी भी चीज़ों को अलाउ करना, पास होने देना। तो जो कंडक्टिंग टिश्यू है क्या पास करते हैं, वो फूड और वाटर पास करने का काम करते हैं। लेकिन जब अगर हम जाइलम की बात करें तो जाइलम बहुत ही स्पेसिफाइड है। जाइलम सिर्फ क्या है, ये एक वाटर कंडक्टिंग प्लांट टिश्यू है। ये अपने अंदर से क्या करता है, वाटर को पास होने देता है। क्योंकि जो प्लांट है, प्लांट या ट्री, उसके रूट्स कहाँ पर है, ग्राउंड में है। पानी कहाँ पर है, ग्राउंड में है। लीफ कहाँ पर है, टॉप पे है ना। तो खाना जो बनाता है फोटोसिंथेसाइज करके प्लांट, वो तो खाना तो उसका लीफ में बनता है। तो पानी की ज़रूरत खाना बनाने के लिए कहाँ पर है, लीफ में है। तो रूट से लीफ तक का पहुँचाने का काम कौन करता है, जाइलम करता है। ओके, तो रूट से लीफ तक का वाटर ट्रांसपोर्ट कौन करता है, जाइलम करता है। ऑलराइट, और जाइलम की हम अगर बात करें तो ये 4 कंपोनेंट से बना हुआ है, तभी तो ये कॉम्प्लेक्स है। ठीक है, और वो 4 कंपोनेंट्स में 3 कंपोनेंट्स डेड है और 1 कंपोनेंट लाइव है। ठीक है, अब वो चारों कंपोनेंट्स क्या है, तो वो है जाइलम वेसल। ठीक है, जो जाइलम वेसल आप देख रहे हैं, वेसल एलिमेंट, तो ये कोई पूरा एक सेल नहीं है। ये एक सेल है, ये एक सेल है, ये एक सेल है। तो मतलब बहुत सारी सीरीज में सेल्स जुड़ के एक लॉन्ग ट्यूब बनाते हैं। ऑलराइट, ट्रैकेड्स देख रहे हैं आप, ये जो ट्रैकेड्स है ये भी कैसे हैं, लॉन्ग और नैरो है। इनका भी जो एंड है वो क्या है, टेपरिंग है। और ये क्या करते हैं, वाटर ट्रांसपोर्टेशन के काम में ये इन्वॉल्व रहते हैं। तो जाइलम वेसल है, ट्रैकेड है, इसके अलावा फाइबर है और जाइलम पैरेन्काइमा है। जो फाइबर है, फाइबर जहाँ भी होता है उसका काम क्या होता है, स्ट्रेंथ प्रोवाइड करने का काम होता है। तो यहाँ पर भी ये क्या करेगा, स्ट्रेंथ प्रोवाइड करेगा। ठीक है, जो जाइलम पैरेन्काइमा है ये मदद करता है वाटर के ट्रांसपोर्टेशन में। और ये तीनों भी डेड कंपोनेंट है, सिर्फ ये क्या है, लाइव कंपोनेंट है। ओके, तो ये है जाइलम पैरेन्काइमा। Then this was about xylem tissue. The other is phloem structure. Xylem was involved in food transport. Xylem was involved in water transport. Phloem is involved in food transport. Right. So ये एक फूड कंडक्टिंग टिश्यू है। ये भी 4 कंपोनेंट से बना हुआ है, जैसे कि सिव सेल्स, फ्लोएम फाइबर्स, फ्लोएम पैरेन्काइमा और कंपेनियन सेल्स। ठीक है, अब जो ये सेल्स हैं ये क्या करते हैं, साथ में काम करते हैं। आपको सारे सेल्स यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं, है ना। दे हेल्प इन ट्रांसपोर्टेशन ऑफ फूड। यहाँ पर भी जो फ्लोएम फाइबर है वो फाइबर क्या करेगा, जो फाइबर है वो फाइबर क्या करेगा, उसके स्ट्रेंथ में मदद करेगा। जो फ्लोएम पैरेन्काइमा सेल्स है वो क्या करेंगे, ये स्टोरेज का काम करेंगे, फूड के स्टोरेज का काम करेंगे। ठीक है, और कुछ ऐसे पैरेन्काइमेटस सेल्स जो बहुत ही ज्यादा, मतलब इनके एसोसिएशन करवाने वाले कौन है, कंपेनियन सेल। ठीक है, तो जाइलम और फ्लोएम साथ में काम करते हैं और पूरे प्लांट में ट्रांसपोर्ट का काम करते हैं। क्या ट्रांसपोर्ट करते हैं, फूड और वाटर ट्रांसपोर्ट करते हैं।
अब दोनों में डिफरेंस देख लेते हैं। जो जाइलम है हमेशा ही उसको रूट से और वाटर को लीफ के पास लेके जाना है, कभी लीफ से रूट के पास नहीं लेके जाना है। इसके लिए जो जाइलम है वो सिर्फ वन वे काम करता है। वो कैसा है, वो यूनिट डायरेक्शनल है, मतलब वो सिर्फ नीचे से ऊपर जा सकता है। लेकिन जो फ्लोएम है वो वाटर और फूड दोनों भी बेसिकली फूड में जो वाटर प्रेजेंट है वो वाला वाटर, ये दोनों ही ट्रांसपोर्ट करता है। और इसकी ज़रूरत तो पूरे प्लांट में कहीं पर भी हो सकती है। इसके लिए ये ऊपर और नीचे दोनों ही साइड ट्रांसपोर्ट कर सकता है। तो इसको हम बाई डायरेक्शनल या मल्टी डायरेक्शनल बोल सकते हैं, इसका जो फ्लो है। ठीक है, इसके अलावा thick walls stiffed with lignin, and here cells have end walls with perforations. Perforations means holes. Okay, no end walls between cells, and here you all can see the end walls between cells. So this is some basic difference between xylem and phloem. Just to see a summary of the whole chapter, we saw plant tissue, which was divided into meristematic tissue and permanent tissue. Meristematic tissue is something which keeps on dividing the cells and helps in growth of the plant. When meristematic tissue are done with the dividing thing, they get converted into permanent tissue, in which the cells are highly specialized and perform specific function. They do not divide. Meristematic tissue is found anywhere and everywhere wherever the growth takes place. Meristematic tissue is further divided into apical, intercalary and lateral. Apical helps in the growth of root and shoot tips, which helps in lengthening the height. Intercalary at the nodes, and lateral helps in increasing the girth or diameter of the tree. Then permanent tissue, we have a simple tissue and complex tissue. In simple tissue we saw parenchyma. Simple tissues are associated with the support and protection. We have parenchyma, collenchyma, sclerenchyma. parenchyma में हमने chlorenchyma भी देखा। ठीक है, इसके अलावा इन कॉम्प्लेक्स वी हैव xylem एंड phloem टुगेदर नोन एज अ वास्कुलर बंडल्स और कंडक्टिंग टिश्यू। ऑलराइट, very simple and sweet chapter. And the last, what is the difference between meristematic tissue, permanent tissue, that we have already discussed. Just have a glance at it. Meristematic tissues are continuously dividing, permanent do not divide. Here cells are small and isodiametric. The word iso means equal, diametric means diameter. The cells in meristematic tissues are equal in diameter, are equal in size, which is not the case in permanent tissue. Here the cell wall is thin and here the cell wall is thick. This cell wall becomes thick and dead. Here the nucleus is large, here the nuclei or the nucleus is small. Vacuoles means nothing but the empty space inside the cell. These empty space are absent. Here the empty space are present. The presence of a vacuole indicates the storage, which is done by permanent tissue. Intracellular space is absent, present. Metabolic activities means the reaction, the growth, the division, the rate is very high and here the rate is very low. Inorganic inclusion absent, that means inorganic content absent, here it is present. Cells are undifferentiated, that means they are not specialized. Here the cells are differentiated, that means the cells are specialized for particular work. All the meristematic tissue are simple tissue, but permanent tissue can be simple or complex. Alright, so this was all about plant tissue, the short and sweet chapter. I hope you all have understood. If there is any doubt regarding any topic, feel free to write in the comment section. By the time, stay home, stay safe. God bless you all.